Hello, Ankit. Welcome to the Salesforce Testing Guy. And first of all, thank you so much for giving your valuable time. And as you know that the agenda of Salesforce Testing Guy is very crystal and clear in nature, like how we can help to the freshers who are looking for a job in Salesforce, and other than that, like how we can guide them for a better futures who are basically looking for a good job in the field of Salesforce. So I'm welcoming you once again. Hi, Ankit. Hi, Gandhav. Thank you for having me, first of all. It's really a great pleasure to talking with you. Uh, Okay. yeah. Okay. And Ankit, the main agenda of this podcast is that recently you have cracked the one of the, I must say, biggest company like Salesforce. So Yep. here in this particular podcast we are mainly talking about like how you cracked up Salesforce. So hmm after interacting with multiple students who are currently pursuing MCA from IP University, I have a recent conversation over there, and while conversation with all those aspiring Salesforce students, I have prepared a few set of questions that will directly helps all those individuals who are looking for a good job in the field of Salesforce. So I'm going to hmm ask you mainly all those 6 to 7 questions. So so Okay. let's start. Like first of all, I just want you to Sure. please introduce yourself to our audience, that is Salesforce testing guy. Hey, hello everyone. My name is Ankit, and I am currently working in Salesforce as a Salesforce developer. I have around 3 years of experience. Previously, I was working in Accenture, Pune, right? Okay. But yeah, so that's all about me. Okay, okay, that's perfect. You recently cracked the Salesforce. Like, I just wanted to know that how you have applied to the Salesforce. What is the procedure of applying over there? So see, Gandhav, according to me, the best procedure to apply to Salesforce is to get a referral from someone, because Okay, in that, na, there is a guarantee of the HR of calling you. Almost, I think the probability of calling the HR, receiving a call from the HR is like higher than you going and applying directly from the portal. So मैं समझता हूँ कि ये best है यार. This is the best. So get a referral from someone okay, who is working in Salesforce. They'll be really happy to help you okay. to refer you. True, true. And I just wanted to know a few things about like Salesforce preparation point of view, because at the end, without preparation and without rejection also, to Exactly. crack that particular brand, it is a very tedious task for you. So may you Yeah. please let me know to our audience that how did you prepare for the interviews for Salesforce? hmm So earlier, like when I was working in Accenture, I was introduced to Salesforce around 2019, Okay, and at that time, I didn't had a clue at all, like what exactly Salesforce is, something to do with sales. I was really frightened as to why they have put me in that technology. My other friends were going for development and all. I was really scared at that time. So मैंने सोचा यार ये क्या हो गया मेरे साथ अभी कुछ करना पड़ेगा तो मैं जाके बात की एचआर से मैं कहा मेरे को ये सेल्स फोर्स में नहीं जाना so she asked me do you even know what is salesforce so I said no can you tell me in that case what is salesforce so she told me about the whole list of things that is okay, okay, like it really got me excited and hmm, उसके बाद से मैंने अपनी salesforce जर्नी स्टार्ट की इन एक्सेंचर okay, राइट और उस टाइम मेरे को 1 साल तक तो मैं ऐसा ही क्लूलेस था क्योंकि एक्सेंचर बीइंग अ सर्विस बेस्ड कंपनी सो पता ही है काम मतलब पता ही है आपको ठीक true, है true, true, true. And तो and बढ़िया काम चल रहा था हाँ मतलब यू नो काम वैसा था कि करना है करो नहीं करना मत करो वैसा वाला सीन था तो true. उसमें सीखने का नहीं हो रहा था उतना बट मैंने फिर खुद से एक स्टैंड लिया एंड खुद से ही सीखना स्टार्ट किया इसे you know from trailheads from YouTube, and I also purchased I think one course from Udemy also, which really helped Okay, me a lot. Okay, that's perfect. because I was not strong in the development area of Salesforce, so मैंने उसका एक specific course लिया which started from the scratch from the ground level. तो उससे मैंने prepare करना start किया and trailhead, super badges Okay, really helped me a lot. So that's उसमें जो use case रहता है ना, तो that is like really helpful. So वो exact scenario बताता है, business scenario on how to implement these things. So yeah, there's that. And
मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया यार। मैंने एक मोटी सी नोटबुक बनाई, सेल्सफोर्स लिख दिया था उसके ऊपर, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट प्लस पूरा सब लिख दिया था। एडमिन से स्टार्ट किया था मैंने, बेसिक से, लाइक रिपोर्ट्स एंड Okay. डैशबोर्ड से स्टार्ट करके मैं लेके गया था उसको इंटीग्रेशन तक, रेस्ट एपीआई और सब सब चीज कवर कर डाली उसमें। वो True, true, नोटबुक true, भर दी थी मैंने 2 साल के true. अंदर। Okay, okay, okay. It means like you started from the scratch by learning from the trailhead. Like trailhead always या notates the fun way to learn. An ocean of information, which is totally related to the Salesforce base. That's एग्जैक्टली। perfectly fine. Like I just wanted to know one more thing. Like how many rounds in the Salesforce? Okay, so for me, the rounds were like basically there were 3 rounds. First is Okay, like the HR will call you after like I got a referral from one okay, of the LinkedIn connections. So the HR called me and asked me whether what experience do you have, what which project you are currently working upon, and what is your role in that. तो उसके बाद ही she scheduled an interview in the coming week. Like she asked me for my availability, and I said, let's do it on the next week. So like okay, HR ने मंडे को कॉल किया था एंड नेक्स्ट ट्यूसडे को मेरा टेक्निकल राउंड शेड्यूल कर okay. दिया था उन्होंने। Perfect. ठीक है, फिर उसके बाद ही उन्होंने लाइक अच्छा जो राउंड था ना टेक्निकल वाला, Hmm. इट वेंट फॉर अराउंड 1 1 hour 45 minutes। 1 hour 45 minutes. Okay. 1 hour 45 minutes उसमें उन्होंने कवर किया स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिन, जैसे कि व्हाट आर बकेट फील्ड्स एंड ऑल दीस थिंग, मतलब सारी चीजें उन्होंने कवर कर डाली एडमिन से लेके। फिर उसके बाद वो लोग गए डेवलपमेंट में, एपेक्स ट्रिगर से उन्होंने कोड करवा के देखा। एंड Okay. फॉर लाइक मैंने 2 फॉर लूप से किया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज दिस थिंग। तो उन्होंने मैप से बोला कि मैंने बोला मतलब मैप से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसे। तो उसका कोड का ऑप्टिमाइजेशन किया, सारी चीज़ें उन्होंने पूछी मेरे से। देन दे Okay. वेंट ऑन टू आस्क मी अबाउट एलडब्ल्यूसी, सो Lightning Web जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क components. के बारे में। जावास्क्रिप्ट के बारे में पूरा पूछा उन्होंने मेरे से, उसके बारे में उस पे भी थोड़ा कोड करवा के देखा। फिर इवेंट्स होते हैं ना जावास्क्रिप्ट मतलब एलडब्ल्यूसी में, तो उसके Okay. बारे में भी दे आस्क्ड मी सब bubbling of events, how you can how an event propagates from DOM, so सारी चीजें पूछी उन्होंने मेरे से। एंड बहुत टाइम चला वो इंटरव्यू में, एकदम मतलब थक गया था उस टाइम एंड तक। But और उसके but at बाद the end success तो मिल ही गया. हाँ, सक्सेस मिल गई। एग्जैक्टली। एंड या तो उसके बाद मतलब उसके जस्ट अराउंड एचआर का कॉल आया उसी दिन Okay. अराउंड इवनिंग में। एंड फिर मैनेजरियल राउंड था, सो दैट वाज द Okay. लास्ट राउंड। Okay. Okay. In conclusion, you have the 3 rounds. First one is the HR round where in राइट। order to schedule your interview. Second round will be related to your whole techie part, and the third one is totally related to the managerial part. Okay, that's perfectly fine. एग्जैक्टली And एग्जैक्टली। one more questions like from the perception of a fresher. For example, a fresher is there whose name is Gandharv, and he is looking for a job in the field of Salesforce, and he does not have a penny idea about that what is actually Salesforce, but he is looking for a job in the Salesforce. So what is your tips that you have to guide to Gandharv? Okay, so Gandhav, my friend, you have made a like the perfect decision to get into Salesforce first of all। Thanks ठीक for है, और motivating him. you can first of all see what is Salesforce basically। ठीक है, what exactly Salesforce is CRM system and all, and how it can like benefit you in your career, that thing you Okay. see. So to get excited first of all for Salesforce, then you start learning it, okay, because maza tabhi aega when you are getting excited. If you think that it's just another technology, so you will get bored, right? So uske baad you can start learning from trailhead. You can Okay. explore YouTube. There are many channels, SFDC Panthers हो गया, then SFDC Facts, and Okay. बहुत सारे channels हैं, websites हैं, you can go through them। trailhead इसके supervisors you can go through them, और trails हैं, you can go through them। So yeah, that's how you can start with Okay, okay. And like for example, one simple question according to my perception and as an experience, like for example, अगर मैं सेल्स फोर्स को क्रैक कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं उन कंपनीज को क्रैक कर रहा हूँ सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को जो सेल्स फोर्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, तो आपका
एज अ उसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस में क्या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो सेल्सफोर्स बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम करती है, और दूसरी तरफ उन क्वेश्चन उन उस सेल्सफोर्स से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें क्या डिफिकल्टी लेवल में कुछ था, कि उनके जो भी इंटरव्यूअर था उनका एटीट्यूड क्या था पूछने का, क्योंकि सेल्सफोर्स इटसेल्फ अ वेरी बिग ब्रांड एंड एम्प्लॉयमेंट उनका तो इतना है, एग्जैक्टली। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज उनके खुद के काम कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब सेल्सफोर्स एक सीआरएम तक तो लिमिटेड नहीं है, it has its different stuff, starting from CPQ, sales, एग्जैक्टली। marketing, padot, and so on. So I just wanted to know one thing, like your experience with Salesforce-based organization and your experience with Salesforce itself. So that's a good question actually. So जैसे कि for example when I attend an interview partner, Salesforce के जो partners हैं, for example Wipro हो गया, Barclays and all. So अगर मैंने उनका experience share करूँ, तो they were more like, okay, how will you implement this? This is your scenario. They have given you one scenario or a use case, and they want you to understand it first and then code it, or tell you how want you to tell how it is, how will you go about it. Okay, Okay, so okay, how will you go about the solution? But in Salesforce itself, they are more basically looking for, how will you optimize one solution. Okay, you have given one solution, you have okay, given one use case, okay, right? But how will you optimize that? That's their basic area of what they're looking for. Basically, how will you optimize that thing okay, okay. Optimization is one of the key factor that basically Salesforce is that looking for. they are looking Okay, for? okay, okay. That means कि एक upper edge वहाँ होना चाहिए, उस हाँ, optimization को exactly. पकड़ के चलना पड़ेगा अगर एक fresher को change करता है. Hmm. That's perfectly fine. Uh, one question is related to, like for example, Salesforce में अप्लाई करने से पहले क्या Salesforce की क्या कोई डिमांड रहती है सर्टिफिकेशन को लेके, कि वी नीड 4 क्रॉस सर्टिफाइड डेवलपर और वी नीड 3 क्रॉस सर्टिफाइड डेवलपर, ये डिमांड रहती है, और क्या इसके साथ वो कुछ नंबर ऑफ बैजेस को लेके भी डिमांड करते हैं कि आप 1 क्रॉस रेंजर होना चाहिए या 2 क्रॉस रेंजर होना चाहिए? सो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा इनपुट दे देंगे अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग और Mhm. एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, सो ये वाला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हेल्प करेगा फ्रेशर्स को Hmm. लेके. Right. So बहुत लोग पूछते हैं that how many certifications are required. So basically, I would say admin is required first of all. Okay, ओके, and second is app builder is required. You don't need to get into PD1 and all, but ये दो certifications are the prerequisite, I would say. ओके, But अगर ऐसा है कि आपके पास admin भी है ना, तो they will consider you at least. I mean, yeah. But अगर आपके पास PD1 वगैरह है, तो then they will surely shortlist you and आपका interview schedule हो जाएगा. ओके, ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन. एंड लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा सेल्सफोर्स में, जैसे अब मैं एंट्री चाहता हूँ सेल्सफोर्स में, आपने पहले भी इस चीज Mhm. को बहुत अच्छी तरीके से मेंशन कर दिया कि अगर रेफरेंस होगा तो आपको एक अपर हैंड रहेगा कि कॉल आने का चांस है. Exactly. ट्रू. Mhm. बट समवेयर कॉल तो मुझे एचआर का ही आएगा, क्योंकि एचआर इज द वन आई पर्सनली आई हैव वेरी वेरी गुड रिस्पेक्ट फॉर द एचआर पर्सन, Mhm. बिकॉज दे आर द वन हु True. इज कि वो एक अच्छे टैलेंट को लेके आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के. Exactly. सो वो भी स्कैनिंग तो करते ही होंगे रिज्यूमे, वो रिज्यूमे में क्या क्या पॉइंट्स को देखते हैं, लाइक आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है तो इट मींस कि उनके वो वाला जो पॉइंट्स होंगे चेकलिस्ट, वो कहीं ना कहीं टिक Hmm. हुआ ही. सो आप इस पे थोड़ा सा पॉइंट्स को मतलब गाइड करें कि किस तरीके से हुआ था. So मेरे हिसाब से ना, certifications they will see, okay, and the ओके, project that you're currently working on and the current organization that you're working on, और आपका overall exposure कैसा है इस technology से, ओके, and how hands on कैसा है आपका इसके ऊपर, and आपने अपने resume में exactly mention क्या किया हुआ है. ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया था कि आई हैव ऑप्टिमाइज्ड और आई हैव सेव्ड 20 मैन आवर्स ऑफ माय टीम बाय ओके, मेकिंग दिस प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइज्ड और हैविंग दिस फीचर लोडेड. ये सारी चीजें मैंने मेंशन करी हुई थी. तो दे सी दीज थिंग्स. ऐसा नहीं बोलना कि मैंने इस पे काम कर रखा है. भाई आपने काम किया है, लेकिन हम्म, आपकी जो काम किया ना उसका आउटकम क्या निकल गया है, उससे आपकी लाइफ कैसे बेटर हुई है, या फिर आपके कलीग्स की लाइफ कैसे बेटर हुई, ओके, उनका टाइम सेव कैसे हुआ है. तो वो चीजें भी आपको डालनी चाहिए उसके अंदर, ट्रू, राइट. ट्रू, एंड एंड बेसिक, जैसे मैंने गिटहब का लिंक डाला था अपने प्रोफाइल में, लिंक्डइन का लिंक डाला था, तो वो सारी चीज भी यू शुड ऐड. एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, फॉर एग्जांपल मुझे आई वर्क विद, आई हैड अ स्टार्टअप बिफोर, तो मैंने वो सारी चीजें उनमें उसमें मेंशन ओके, की थी. सो
I think that's what they even asked me in the end. What's this thing that you have developed? So in my college days, I was working on a startup. So Okay. they asked me this also. So yeah, these are the things that they look for. ओके 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 इट मींस ट्रांसपेरेंसी रिज्यूमे में जितना होगा और जो चीज आपने लिखी है अगर आपको उस चीज पे जस्टिफाई हाँ. होंगे सो दे विल Hmm. यू नो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और शॉर्टलिस्ट होने का चांस भी बढ़ेगा और जो एचआर की चेकलिस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली Hmm. 100 ऑन 100 जाएगी दैट्स परफेक्टली फाइन Exactly. एंड Exactly. यू नो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट लाइक फॉर एग्जांपल your final tips for all those freshers who are looking for a job in a Salesforce. It doesn't matter whether in a Salesforce itself, but it's any organization. For example, I am from Tier 3 college and I am looking for a job in the Salesforce because अगर हमें किसी को बताएं किसी जैसे मेरा एक्सपीरियंस जितना मैंने शुरुआत में जब मैं सेल्सफोर्स नहीं पता था तो मुझे किसी ने बताया कि यार सेल्स फोर्स में जाते हैं मैंने कहा यार सेल्स में मेरे को नहीं करना Hmm. मैंने तो यार एमसीए किया हुआ है कहते नहीं ऐसा नहीं है देखना इसका फ्यूचर क्या है तो आपके क्या Hmm. पॉइंट्स हैं क्या सजेशन है कि सेल्स फोर्स में किसी को जाना है फ्रेशर लेवल पे तो इन टर्म्स ऑफ उसे पैकेज को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये किस तरीके से उसे मोटिवेट रहना चाहिए और किस तरीके से सेल्स फोर्स में एंट्री करनी चाहिए उसे Okay. So देखो यार टायर 3 कॉलेज या टायर 2 कॉलेज से आई डोंट थिंक सेल्स फोर्स में इटसेल्फ इतना फर्क पड़ता है क्योंकि ना दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर स्किल्स एंड हैंड्स ऑन जैसे कि आपने ना अगर अपने हैंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेशर्स को ना अपने लाइक गलतियां करनी चाहिए खूब सारी ठीक है अपनी गलतियों से सीखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ट्रू ऑल गलती करके छोड़ नहीं देना ट्रू चाहिए उसको और गलतियों से अपनी सीखना चाहिए ठीक है और उसको और इम्प्रूव करना चाहिए फॉर एग्जांपल आपने कोई किसी चीज में एक मिस्टेक कर दी टेस्ट क्लास में मिस्टेक कर दी आपके कोड कवरेज नहीं बढ़ रही ठीक है तो उसको आप ठीक है आपने कर दिया कांड ठीक है फट गया वो लेकिन उसके बाद आपको उससे सीखना चाहिए ठीक है और उसके बिल्कुल बाद आपको उसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती ना हो ताकि ठीक है उसके ऊपर आपको एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए ओके लाइक आपको टेस्ट क्लास में तो भाई आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता आपको वैसा हो जाना चाहिए उसमें ठीक है तो ऐसी गलती करो ट्रू बट सीखो उस गलतियों से और कभी भी लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि डर 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 के काम करना है एकदम बिंदास काम करो आराम से सीखो इस चीज को एंड काफी सही है सेल्स फोर्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें और सीखने के लिए तो बहुत लाइक इट्स एन ओशन ऑफ लर्निंग आई वुड से तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार आप क्या सीखूं ठीक है भाई ओके अभी आपने एडमिन सीख लिया डेवलपमेंट सीखो इंटीग्रेशन सीखो एलडब्ल्यूसी सीखो और आ जाओ और चीजें सीख लो दूसरी क्लाउड में आ ओके जाओ ठीक है ऑर्डर मैनेजमेंट सीख लो बहुत सारी चीजें हैं इसके ट्रू अंदर ट्रू हम्म, that yes you truly said that it's an ocean of information exactly and if any हाँ individual or if any students who are looking for a job in the fields of Salesforce he or she must have to have he she must have an account on Facebook as well as Trailhead also I must say true right yeah yeah and I must say thank you so much Ankit for sharing your valuable time and your experience that you know definitely help all those you can say that Salesforce aspirants who are looking for a good job in the Salesforce and if you have any comments or Mhm. anything you just want to share over there yeah I would just say that keep learning whenever you have time, anytime. जैसे कि आपके पास कोई भी free time है ना, so just pick any topic and start learning. अभी तो Trailhead you can also access on mobile application भी है, iOS में भी है, Android में भी है. You can true go through it yes और just keep learning those things and never stop learning because जब आप stop कर दोगे ना learn करना तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, फिर खत्म है. good okay thank you so much Ankit for joining thank you bye bye Thank you, Gandharv. Thank you. Bye bye.